So, Srila Bhaktivedanta Maharaj is speaking about the intense affection of Gadadhar to Mahaprabhu and vice versa. So, Krishna could not taste the three aspects of Srimati Radhika in the pastimes of Krishna. The shlok, Shri Radha Pranema, Kidrisho Vanema. What is the Pranay Mahima? Deep of an affection for Krishna. The qualities of Anurag, what are they? What is the deep attachment? It's shown in Ujjwal Nilamani. It has been said they are bound by their love and affection, which is not possible to describe. Parashparanu Bandhanam. By their love and affection, they are tied together. And the second is darshan atriptata. Even after seeing each other, they are still not satisfied. They just want to see each other more and more. Krishna sees Radhika and Radhika sees Krishna. The eyes are tasting everything. Through the eyes, Krishna is tasting Srimatika's sweetness, and vice versa. Radhika is tasting Krishna's sweetness. In Ujjwal Nilamani Grantha, it is said of the qualities of Anurag, two things. What did I say? Darshan atriptata. Atriptata is one quality. Parasparana sneha anubandhana. Because of their love of an affection, they are so tied together. And darshan atriptata. However much they see each other, they are not satisfied. Sanatana Goswami is giving the example. One type of disease, you get high temperature. The body becomes so hot. If you touch your hand, you feel like it's on fire. The desire of such a person is to drink water, so much water, because of the heat in the body is intolerable. That diseased person, all he wants to do is to drink water. But if that person drinks water at that time, they would die. They are screaming, shouting, please give me water, please give me water. But the doctor is saying, if you take water, you will die. But the doctor gives only half
a teaspoon. But taking that half spoonful of water, his desire to take water increases and increases more and more. In that same way, in the stage of prema, like want more and more. Just seeing Krishna's form, she is not satisfied. Wherever her eyes falls on Krishna's limbs, they become fixed and does not move from there. Whatever limbs of Krishna's body Srimati Radhika sees, they becomes fixed. Once the Sakhis became glorifying Chandravali. From the glorifying Chandravali's seeing Krishna's form from head to toe. Srimati Radhika's Sakhis are saying of Chandravali that she is so fixed on his darshan. But Srimati Radhika, just seeing just any one of Krishna's limbs, she becomes fixed on that. Her eyes will not go to any other limb. Prem, love, is like such that Krishna's beautiful form. Rupa Goswami is describing that once Srimati Radhika had met Krishna in one kunj, and she was coming out of that kunj, and just outside the kunj was Lalita Devi. Lalita Devi asked Srimati Radhika, "Oh Srimati Radhika, please describe to me the beauty of Shyam Sundar's form. You've just come from meeting him." Hearing this, Srimati Radhika cried. Why? Srimati Radhika said, "You please tell me what that Shyam Sundar is like, what his arms and limbs like. I've never seen him before." Lalita Devi said, "Oh, mad girl, you just come from meeting him." Just hearing the word Kri, she becomes mad. Chandidas is saying in this kirtan, in Giti Kuch, just Shyam, listen. Sha or Kri, just entering my ears, my limbs become stunned. Soi means O Sakhi. What kind of sweetness in the names of Krishna? Who can explain? We chant the holy names, but Radha is saying, just listening to the first syllable, but we are like chanting 2 rounds and giving up.
This is called anurag, deep attachment. And another symptom of anurag, one sees one's beloved in an ever fresh and new form, as if never seen before. Govinda is only possible because he is the Supreme Personality of Godhead. So he is the ocean of rasas, loving mellows. Govinda is that divine mellow, rasa swarup hai. ऐसे सुंदर रस स्वरूप की कौन वर्णन करे? Who can describe such a person? आइए, राधा जी ऐसे करते करते कभी-कभी मूर्छित हो जाती हैं. And seeing this, she becomes unconscious. अनुराग की जो सर्वोत्तम जो है, this is the topmost symptom of anurag. सर्वोत्तमता प्रकाश होती है. See. We cannot understand what this anurag is in this material world. We cannot see this ever new and fresh forms. Everything is always dwindling. Everything is perishable. It disappears, dwindles. But in the transcendental world, everything is fresh and new. There in this world, how many tenses are there? Present tense, past tense, future tense. But in the transcendental realm, there's only one tense, Vartman. It's the eternal present. Perfect present tense. There's no other tense. That's why it is called the transcendental realm, because it is beyond our material conception. In this material world, things are always changing, moving, but in the transcendental realm, they are always new and fresh. You cannot understand this by your mental capacity. This is called achintya tattva, inconceivable potency, in the form of Govinda. If you see, you will think that you have never seen it before. So it is said. Krishna's Vaibhav, Prakash, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha, Sankarshan. These four Vaibhav Prakash of Krishna, they see Brajendranand and Shyamsundar and they become mesmerized. Even that same Brajendranand and Shyamsundar sees his own shadow. He becomes amazed and sees his reflection. And he says, what is this? And he wants to embrace that form, so beautiful, we cannot describe in this world. What is my form? What is the beauty of my form? That form Srimati Radhika is tasting. What is the sweetness in me? Krishna is thinking that Srimati Radhika is always tasting.
है क्या जी है और आस्वादन करके राधा जी के हृदय में क्या अनुभव होता है tasting that sweetness, what does she experiencing? That these three reasons why Krishna came in Kali Yuga as Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. Will you remember or not? Remember why Krishna came as Mahaprabhu. Remember this shlok. Shri Radha Pranaya Mahima. Moving on. It's said in Shastra and by Vaishnavas that Krishna stole the complexion and mood of Srimati Radhika. Vaishnavas is saying, Bhakti Rakshak Shridhar Goswami Maharaj said, no, he did not steal. He may have stolen the mood, but he cannot have stolen the complexion. And there is evidence of this in the scriptures. When Krishna left Golok Vrindavan, stealing Srimati Radhika's mood, what is the reason for taking the complexion? Whether you're golden or dark complexion, what is the need? But the important thing is the mood. In bhakti, it's not important what color you are. The mood is important. Whether you're blackish or you're a fresh complexion. Because you're a fair complexion, does that mean you will attain the Lord? Or if you're black, that you won't? You cannot say this. Do you understand? What makes the difference? The bhav, the mood. Bhava jahi granad janardana. Bhav sadhana, performing devotional practice with mood to attain your goal. If you don't have that mood, you cannot attain that object. If one chants very nicely, does kirtan, but in their heart they do not have the mood. Everyone may be pleased, but the Lord may not be pleased. What is the Lord hungry for? He's hungry for the mood. If that devotee chants kirtan, does kirtan with the mood, then the Lord will accept. An example, a child was pronouncing the shlokas from the Bhagavad Gita. People were saying, oh, this is not good. But he came to Mahaprabhu and chanted. Mahaprabhu asked the child, have you recited the Gita? Yes. But why are you crying? Why are you while you are chanting? The child said, I don't know how to chant properly the mantras in the Gita, but I'm following the instructions of my spiritual master. And I'm seeing Krishna, a smiling face, and giving instruction to Arjuna. This vision is coming in front of me. And seeing this, I cry. Mahaprabhu said that your reading of Bhagavad Gita is successful. Somebody recites a shloka, but without the mood. And if both are there, then it is very auspicious. Both mood and skill. It's very good.
तो मेरे कहने की described पर like a मैं golden details ornament. दे रहा हूं, भाव ही प्रधान है. So the bhav चलो is कृष्ण राधा prominent. ने क्या चोरी किया? भाव को चोरी किया. कि भाव ही And जरूरी है. So if we say Krishna stole the कि राधा mood की of होती है भाव का स्मरण करने के Srimati बाद Radhika, कॉम्प्लेक्सन की क्यों चोरी किया? why did he steal the जरूरत complexion? नहीं था. There was no need for that. तो इसी के संदर्भों में हमारे भक्ति रखा सीधा कृष्ण एक उदाहरण Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj is giving one example from the Puranas. देखो एक समय की कथा है. Once राधा और कृष्ण Radha and Krishna were in a solitary place in the Kunj. दोनों प्रिया प्रियाजू की बहुत The lover सुंदर and beloved प्रेम संदर्भ चल रहा था. were आनंद की लहरी चल रही थी. great pleasure, वह वृंदावन कैसे सुंदर, that beautiful Vrindavan. कुआ के कोयल कुहक रही थी. The birds were singing, पक्षी आदि जो है making पक्षी जो their है वहाँ पर भी sounds. चरण करते. हिरण हिरणी The deer और सुंदर and हवा मृदुमंद हवा बसंत काल की जो were हवा चल रही थी. happily engaged with each प्रिया other. प्रियाजू की The इतने air आनंद was की sweet लहरियां चल रही थी. and refreshing, बस एक दूसरों की डूबी हुई थी. and everyone अकस्मात से was राधा के मन में absorbed कुछ in भाव आए. divine love. राधा जी कहने लगी थी, ये प्रेम प्रियतम गोविंद, Radha said to Krishna, "Oh my beloved, I never asked anything from you, but today I want to ask something from you. आप दोगे? Will you बस give?" इतने ही कहते Saying this, श्याम सुंदर रो पड़े. Shamsundar श्याम began सुंदर to कहने, cry. राधे Oh, तुम्हारे Srimati और हमारे में Radhika, अंतर क्या है? what is the difference in you and me? क्या आप मांगने की क्या जरूरत है? Why do you have to ask? यदि हम एक ही है, If we are one, तुम्हारी है हमारा हमारा what है is तुम्हारा. mine is yours, what is yours is mine. यदि हम एक ही सब मानते हैं, तो तुम्हारा है हमारा, हमारा है तुम्हारा, और हमारा तुम्हारी राहत नहीं. ये हमारा तुम्हारा ये शब्द जो है, ये दोनों की प्रेम के प्रतिबंधक बन जाता है. प्रतिबंधक If we division becomes obstacle. If we consider that something is yours and something else is not mine. प्रेम ऐसे Love is such, is very simple and pure. There is no obstacle. प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में बहुत In सुंदर Prem वर्णन किया. Samput, कभी the समय book. तो प्रेम संपूर्ण ग्रंथ भी आपको बता देंगे. इतना सुंदर कथा if है. I have time, we can speak of this. लोग संसार में जाते हैं, प्रेम किसको कहते हैं जानते नहीं, इसे इधर भटक कर आते हैं. That defines Prem. If you understand a little bit, then you cannot get lost. You cannot become bewildered. Krishna Chakravarti Thakur, he wrote this book, Prem Samput, जिसमें स्वयं कृष्ण in which Krishna देवांगना के रूप में आए. देवांगना समझते हो? as in the form of an apsara, Devangana, और a celestial girl, श्रीमती राधा की इस प्रेम के बारे में पूछा. and came in front of Srimati Radhika and asked this question. What is obstacle? In love, there is no obstacles or division, that this is yours and this is mine. एक होता है सच्चा निर्मल, उसमें कोई प्रतिबंधक नहीं होता है. चलो आगे की कथा सुनाता हूँ, क्योंकि प्रेम संपुट में तो बहुत सुंदर सुंदर कथा है, जो कथा शायद आप लोग सुनी ही नहीं होगा. You may have not even heard of. You may have not even heard the name. क्या करते 10 साल लेकर के. What have you been doing for the last 10 years? चलो आगे कथा सुना. कृष्ण रो पड़े. कृष्ण बोले, राधे Krishna began to cry. आप कैसी बात कहा दिया. What are you saying? ये आपके मैं कुछ दूंगा नहीं और बात दिया ही नहीं, ये शब्द नहीं कह सकते. You cannot say that I have not given you anything. मेरा है, मेरा ही तुम्हारा है. What is yours is mine, what is mine is yours. वास्तव में सत्य है. राधा कृष्ण एक ही स्वरूप. It's true. In essence, this is true, that they are प्रेमी one. तो स्वरूप है, दोनों ही की प्रेमी की स्वरूप है. जैसे कमल की डंडी होता है Just और like the पुष्प कैसे stem होता है. of
of lotus flower, यही तो है। 2 flowers. वो पुष्प कहाँ से Spring. हुए? एक ही The both flowers come from the one stem. दो कमल खिले हैं। तो यही तो है बात। एक है राधा और One एक is कृष्ण। Radha, one is Krishna. लीला रस आसक्ति दे धारे हुए। They are one form कृष्ण रो पड़े कृष्ण के in लिए राधे। essence, but they have divided into 2 to taste pastimes. जी मैंने आपको कोई दिया ही नहीं बात आप लेने के बाद ऐसे शब्द कैसे कहा? How can you say, Krishna is saying that I have not given you anything? तुम वचन दो। Srimati Radhika said, but still you promise that you will give me जो मैं मांगू whatever I ask for. कृष्ण कहने लगे अच्छे राधे Krishna is, oh, good and well, ask for what you wish. तो प्रेम राज्य की कथा है, प्रिया प्रिया जी की कथा है। एक ही साधारण कोई हीरो हीरोइन की कथा नहीं है। This is not the talks of ordinary hero and heroine, mundane lovers, दोनों प्रेमों but की transcendental. अच्छा We are talking of 2 persons with the embodiment of divine love. तुम्हारी Oh, Shamsundar, Srimati Radhika is saying, एक ही साथ में मन सर्वांग उनके मैं संपूर्ण रूप से I wish, I want to taste all your limbs, all in one go, completely. सर्वांग उनके तुम्हारे अंगों को मैं आस्वादन करूं। All your limbs, all at the same time, I want to taste. Without thinking, Shamsundar said, okay, all well and good. हमारे जीवन में इंद्रियां जो है सबसे बड़ी इंद्रिया कौन सा है जानते हो क्या? What's चक्षु करना नचका दिया का from the 5 senses, what is the largest sense शरीर को जो है ढक करके रखा है that is captivating? ये Sparsh, स्किन the skin, is the sense that covers the whole body. चर्म से चर्म समझते हो? Skin. इसी के वजह त्वचा कहा जाता है। Tacha. त्वचा समझते हो? Tacha is there. It's called skin. त्वचा की काज क्या है? स्पर्श सुख अनुभव करना। The purpose of this sense is to perceive a sense of touch. अनुभव करता है। आंखों की तरह हम देखते हैं। Eyes we see, कानों की तरह सुनते हैं। ears we hear, nose we smell, जिह्वा के द्वारा the tongue we taste, स्वाद लेते हैं। और त्वचा के द्वारा क्या लेते हैं? and by touch we feel pleasure or pain, heat and cold. और इसलिए कहा जाता है ये त्वचा जो है This tacha, skin, हमारे शरीर की सबसे बड़ी and it's the largest जिससे हम स्पर्श sense that we perceive with ठंडी लग रहा है, cold, गर्मी लग रहा है। warmth, ये वस्तु heat, ये वस्तु soft, hard. किससे अनुभव होता है? By touch we can sense this. है इसके समझो पहली फिलोसफी सुनो शास्त्र ज्ञान में त्वचा त्वचा माने Touch. स्किन के द्वारा स्पर्श सुख अनुभव Skin. टच। The pleasure of और राधा जी ने touch. क्या कहा? राधा कृष्ण से क्या मांग लिया? कौन सा So, what did Srimati Radhika ask for ये from तुम्हारे Krishna? सारे अंगों की एक ही I साथ want में to, all at the same time, मैं अनुभव कर रहा हूँ। experience all your limbs at the same time. सारे अंगों की रूप माधुर्य इतने जो है सुंदर है। Because इसलिए राधा जी तो Shri एक ही साथ Krishna's में limbs are so beautiful. कृष्ण तो वर दे दिया। Srimati Radhika wanted to किंतु अभी कैसे taste. आस्वादन कैसे करेंगे आप बताओ? experience ये भी that एक वैशिष्ट है कि नहीं? all at the same time. हैं? This is one speciality. आलिंगन होता है चेस्ट से चेस्ट आलिंगन If होता you है। बैक embrace, से बैक आलिंगन होता है। then you brace front to front, or if you embrace front to back. But how can you इस पर समझिए। embrace completely? किंतु राधा जी ने कहा एक ही साथ में तुम्हारी Srimati Radhika wanted to decide at the same time to embrace the front, the back. देखो कृष्ण तो राधा जी को तो वचन दे दिया किंतु वचन को पूरा कैसे करें? But how to fulfill this? इसमें उसमें लिखते हैं पुराण में लिखा है
In the Puran, it is written, Krishna is thinking, how can I fulfill this desire of Srimati Radhika? If I can somehow take Srimati Radhika's complexion all over myself, then some way, somehow, I can fulfill this vow, and Srimati Radhika will be able to taste the whole of my body. Srimati Radhika is transcendental. Their sense of touch is complete. So Srimati Radhika's complexion is non-different from her. This is the situation in the transcendental realm. Abhinna, non-different. Srimati Radhika complexion is actually Srimati Radhika herself, which covered Krishna completely. It's not so simple. Krishna is completely covered by Srimati Radhika. Covered Krishna completely by herself. Another, Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj, taking the shloka from the Puranas. When Krishna is coming, after stealing the mood of Srimati Radhika from Golok Vrindavan, Srimati Radhika thought, he took my mood, but will he be able to hold this mood, this vow? Because Krishna has no idea of this Mahabhav that I have, and he does not know what the symptoms of this Mahabhav is, and Krishna will not be able to tolerate this. In this condition, there is so much heat. Sanatana Goswami has written in Brihad Bhagavatamrita. You should read, and you may understand. Read it completely, then you will be able to understand. Today you may only just listen. When prem manifested in the body, the heat, the fire, the actions, what is hot or cold? What is prem? Is it hot or is it cold like ice? We say prem, we use this word, but what is it actually? Swabhav. Every nature is when we say fire, the nature of fire is heat. When we say fire, when we then talk of the nature of that fire is heat, we understand this. Prem. What is the nature of prem? What is the swabhav of prem? Is prem love, transcendental love, cold or hot? Like saying water, we can understand that water has its nature. If anything exists, any substance exists, the nature inside it there. Jayavadama is written of this. When a substance is created, its nature is inherently in that substance. Saying fire, like
the nature is to burn. जल कहने के साथ ही Saying जल की water, स्वभाव उसमें रहता है, तरलता। we have liquidity, fluidity. प्रेम कहते हैं, प्रेम की स्वभाव क्या है? But what is the nature प्रेम of ठंडी है prem? कि गर्मी है? Is love hot or cold? Sanatana Goswami is saying in Brihad Bhagavatamrita, निर्णय देना to give a conclusion on this subject is not possible. है कि बोले हाँ एक ही साथ में All at the same time, love गर्म भी है is एक both ही साथ में hot प्रेम and बर्फ की भांति cold like तो ice. दोनों एक साथ में कैसे होगा? How possible that these two elements can be experienced all at the same time? अनल और बर्फ एक साथ में नहीं रह सकता है। Anal and अनल मान अग्नि। anal meaning fire and Agni with snow, ice cannot stay together. snow and ice, snow and fire cannot stay together. है कि नहीं? Do you understand? One will melt the other, प्रकृति जगत में प्रेम उत्पन्न होने पर but एक ही in the साथ में transcendental दो जो realm, रहता है। these two contradictions exist at the same time. This is transcendental. अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के अग्नि ताप एक तरफ बढ़ा दिया जाए, जितने ताप Innumerable Brahmanda's heat exists, and unlimited Brahmandas of coldness उसके एक साथ में रखो together. बोले दोनों के एक साथ में रखो मिलाओ फिर बोले प्रेम उत्पन्न वही होता है That is एक ही साथ में manifestation of prem. गर्म और एक ही साथ में At the same time, hot and cold, extremes together. This is the transcendental realm of love. कथा सुनाता हूँ राधा जी की तो भाव लेकर के इधर कृष्ण आ रहे हैं किंतु राधा जी विचार Krishna is मेरे coming हृदय में with भाव उत्पन्न होता है the mood कौन of सा Srimati भाव? Radhika. कोई साधारण नहीं है दिव्योन्माद Srimati Radhika is thinking how Krishna will manage these levels of ये कृष्ण के लिए prem. सहन करना संभव नहीं It's not possible for Krishna to राधा जी सोच रही tolerate this. कृष्ण तो चोरी कर लिया Krishna is है, stolen, किसी को माल तो माले माल ले गया किंतु उसकी यूज कैसे करें but how will he use that? हैं यूज करना तो मुश्किल है ना हैं कैसे करो बताओ हैं कोई गरीब व्यक्ति के आपने $100 दे दिया इंडिया में If you give a poor person $100, what would he do? ए तू कहाँ मिला Oh, the police will catch him and say, "Oh, where did you get this from? What are you doing?" पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा विदेशी मुद्रा कहाँ से मिला चोरी किया Foreign currency. Where did you get this from? थप्पड़ मारा करके You just slap him and chastise him. है कहाँ से मिला तुम कहाँ जाओगे तुम हाँ एक साधारण उदाहरण दे रहा हूँ I'm just giving this mundane example. Giving. उसको चेंज करने के लिए पासपोर्ट दिखाओ If you want to change dollar, poor person changing dollars, बहुत रूल्स होता है you need passport. ऐसे थोड़ी बोला तो उसी प्रकार का कृष्ण विचार कर अच्छा चलो आगे कथा सुना तुम Krishna ये is in this dilemma. कृष्ण विचार कर रहे हैं ये राधा जी विचार कर रहे हैं Srimati Radhika is thinking, उन्माद दशा में जो दशा है my unmad इतना प्रेम condition, इतना तीव्र ज्वाला होता है this fire that exists at that stage. Krishna's Kaviraj is saying in Chaitanya Charitamrita, प्रेमामृते कहते हैं विषामृते जन एकत्र मिलन विष और अमृत विष माने poison और अमृत माने नेक्टर दोनों and opposite वस्तु nectar at the same और time, ये दोनों के एक साथ में मिलकर के पियो बस drinking at the same time. प्रेमामृते ये Prem विषामृते जन is like that. विष और अमृत दोनों ऑपोजिट वस्तु Two opposites, मतलब प्रेम उत्पन्न वही होता poison and nectar. है और उसी प्रेम में बड़ जो असात्विक विकार जो है And these, कभी ऊंची हो जाती है, the लंबी 8 हो symptoms जाती है, of और कभी लोट-पोट खाए prem, केले के पेड़ sometimes काट देने से extended, घास पे sometimes गिरता है, पर falling प्रेम on the उत्पन्न floor, ऐसे ही होगा, fainting, हैं? all at हम the कहते same हैं time. सुबह प्रेम हो गया इस जगत We में say, प्रेम किसी को नहीं होता है In this world, nobody can experience प्रेम prem. उस जगत की कथा है
Prem प्रेम is की the आभास होने के talk साथ of से शरीर छोड़कर भी चले जाएंगे, the कोई spiritual सहन कर नहीं world. You cannot पाएगा। tolerate in this material ये body. भाव की अंकुर होने के साथ ही साथ वो साधक Just one छोड़कर शरीर छोड़, drop क्योंकि of शरीर that, धारण the कर नहीं person would leave their body. The हम कहते body हैं इसको तो cannot प्रेम उत्पन्न हो, hold. बाबा जी We शायद cannot. कहते हैं The Babaji's talk about अरे being in प्रेम Prem. Prem is not like that. जन्म जम्मू न हेम नीलोके ना होय चैतन्य चैतन्य दिशा पर नहीं In जो Chaitanya शास्त्र अध्ययन नहीं करते Charitamrita, तो उसको कहते हैं it's clearly explained प्रेम के लक्षण क्या है what is जानते the हैं चलो symptoms of इसलिए Prem. राधा जी सोच रही है Srimati कि Radhika is हमारे thinking दिव्योन्माद दशा मादन का भाव उत्पन्न होने पर कृष्ण कैसे सहन कर पाएंगे how और Krishna कृष्ण के will इतने सुंदर tolerate कोमल this Prem शरीर in Krishna's soft body. और कृष्ण के शरीर में कितनी चोट आएगा How much जब गिर जाएंगे कितने उनके कष्ट difficulties body will इसलिए राधा जी परम experience. करुणामयी Srimati Radhika करुणामयी is the श्रीमती राधिका embodiment of क्या किया compassion, कहीं हमारे प्राण गोविंद के इस वाली शरीर में thought. कोई चोट ना पहुंच जाए so that his body would not become hurt. चोट ना पहुंच जाए इसलिए स्वयं राधा जी ने क्या की Srimati Radhika, गोविंद के सारे अंग में अपना ही क्या हो गया लपेट गए she covered Krishna's body the whole body completely. कृष्ण ये राधा अंग नहीं ये राधा की जो अंग एक This कहते is हैं not ये गौरंग नहीं राधांगे ढका रायमन में कहा दिया स्पष्ट Rayanamanda. He said clearly, this is not the complexion of Srimati Radhika. पहले तुम सन्यास स्वरूप देखा First I saw your sannyas form, then I saw Krishna's form, threefold, और एक गोरी को देखा and then I saw a small girl राधा जी क्या की आपके कृष्ण अंगों को क्या कर दिया who covered ये चैतन्य the चैतन्य body, your body, Krishna's body. ये This is राधा भी coming in स्वयं ही Chaitanya Charitamrita. कृष्ण के Srimati क्या? Radhika गौरंग herself, नहीं तुम्हारा राधांग ढका इसमें स्पष्ट कर दिया रायमन कहने लगे महाप्रभु हे प्रभु Srimati Radhika covered Krishna. ये आपके जो गौरंग जो है माने फ्रेश कम्प्लेक्शन जो है ये आपका नहीं है This ये कौन fresh है complexion ये स्वयं राधा जी is आपको क्या Srimati Radhika herself रखा है इसलिए तो that has राधा covered you. कृष्ण प्रणय विकृति हृदय शक्ति स्मार्ट है इस श्लोक में बहुत सुंदर है राधा कृष्ण प्रणय विकृति हृदय शक्ति स्मार्ट प्रणय की विकार प्रेम विकार स्वयं ही जो है राधा जी कृष्ण के क्या किया Srimati Radhika completely covered Krishna with herself. चोरी करने की क्या जरूरत है There's no need to steal. हाँ ये स्वभाव ही है ये प्रेम की कथा है This is प्रेम में कभी चोरी करने में आनंद होता है talks of loving of pastimes, of stealing. आपके कुछ मांगो हमारे बहुत आप प्यारे हो If, for example, if I ask you something, then you will give me something. But if I steal something, I will steal everything. Chori, this word, stealing, is in this context, this talks of loving exchanges and increases the tastes, moods. And in stealing, there is one kind of happiness, like Krishna. Mother Yashoda feeds Krishna, but he's not so happy with that. But when Krishna steals, then he gets greater pleasure. But ordinary people will not understand this. He has everything. Prem in the transcendental realm is like this. So we can say, in one way, he stole, but you can say in another way that Srimati Radhika covered him so that he would not hurt himself. Gopi Git verse. Because of intense anurag, prem, so that in the Shri Krishna's feet does not experience pain.
इसलिए इस समस्त कथा को बताते जा रहे हैं, है ना? और भी अनेक कथा, पर गौर गोविंद गोस्वामी महाराज And और Gaur किसी Govinda उदाहरण Goswami Maharaj is giving ये कथा another कभी सुनाई example. नहीं। We'll speak of अलग अलग आचार्य, अलग अलग another शास्त्र time. से और Different महापुरुष acharyas have विचार को given स्थापन कर। different types of भक्ति क्या है? sweetnesses. इसी को तो सुनना है तुम्हें। This is bhakti, listening to this भक्ति type और of कुछ नहीं katha. है। इसी को शास्त्र सिद्धांत और माधुर्य को सुनो। Listen to the sweetness of एक तरफ sweet करें, pastimes कृष्ण क्या करें? in the assembly of कृष्ण Vaishnavas. राधा जी के क्या चोरी किया? भाव भक्ति की चोरी किया। Krishna's Kaviraj is saying that फिर दूसरे आचार्य Krishna करे नहीं चोरी करने की जरूरत stole, नहीं है। but another acharya is saying, no, what need is there to steal? उस स्वयं ही राधा जी ही क्या किया? Srimati Radhika herself gave herself cover, ये लागे तो हमारे पर लगे। thinking that if he hurts himself, it's like I can protect him. वो बरामदे पर मैं बैठा रहता हूँ, मैं कभी देखता रहता हूँ, बिल्कुल उसके पास जो एक वो ये भरे ना कैनल जो है, अब देखना हमारे पास I'm seeing from my window. वहाँ पर जो नाली जो है, पानी जो है, there's a उस पानी stream. में एक पक्षी घोंसला बनाया। There's one bird that made a nest there उसको एक अंडा दिया and देखो, laid an वो egg अंडे में बैठा रहता है and sits on that egg, उसको क्या करता है वो and he sits on the egg. It does not move 24 घंटे में 24 घंटे बैठा रहता है 24 क्योंकि अंडे में hours. चोट ना आ जाए because to protect the egg प्रोटेक्ट रखता है and keeps मैं it और भी protected. लक्ष्य करता हूँ उसमें जो है वो फीमेल बैठा रहता है The और female मेल क्या sits करता है? there. वो सारा दिन मैं The देखता male. रहता हूँ क्या करते हैं इसके क्या कैसे प्रेम है दो जोड़ियां हैं Two birds. वो फीमेल जो है अंडा दिया है female is sitting on the उसमें bird. क्या करता है बैठा रहता है Sits in the nest क्योंकि यहाँ पर कोई ठंड बारिश पड़ रही है in case there's rain उला समझते हो and स्नो पड़ सकते snow हैं अथवा कोई पक्षी आकर के उनको or अंडा को any लेकर other के animals come and attack the egg. स्त्री जो पक्षी जो है That भाई मैं female देखा egg तो उसके ऊपर sits, बिल्कुल I ऐसे see, बैठा है। एक सेकंड वो चीज लगता does not move, है और वो पुरुष जो है वो घूमता and रहता that है, male घूमता रहता है। is मैं कभी circling देखता हूँ कि around. पक्षी में कितना दोनों में जोड़ी में कितने प्रेम भी है There's so मैं much देखता love हूँ and वो affection दौड़ कर between चले these two जाते हैं, birds. 5 आदमी जाकर के कहाँ से जो है कुछ खाना जो है लेकर के The एक दूसरे male से खिलाते brings हैं। something for the bird to eat. मैं देख करके आश्चर्य हो गया जे एक पक्षी Seeing this, के I देखो became पक्षी में amazed. कितने प्रेम है Between two birds, there's so much love. वो सारा दिन The whole वो day, बैठे रही the female स्त्री जो sits पक्षी on है, top बैठे of रही her अंडे के nest. ऊपर, और वो पुरुष पक्षी क्या करते That हैं male घूमता रहता है घूमता रहता है wanders here and क्या there, घूमता रहता है उसके लिए collecting वो स्वयं आहार करता है और food. अपने मानव पत्नी के लिए He भोजन collects करके food लाता for है। और himself देता है, and brings फिर चले। for the 2 मिनट भी female 1 सेकंड में bird बढ़ते नहीं उसके खिला करके and feeds फिर चले जाते हैं and then कहाँ moves. चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो एक जड़ जगत में एक साधारण In प्रेम this दिखाई material पड़ता है। world, we can see such एक kind पक्षी of में love ऐसी प्रेम है। between किस two लिए? birds. For what देखो reason? कोई बच्चा जब बड़ा हो जाएगा ना When फिर वो the- पक्षी नहीं क्या हो जाएगा फिर That जब bird बड़ा grows भूल up, जाएंगे वो उड़ करके चले जाएंगे वही that घोंसला bird बना रहेगा, तो बोलो will और यहाँ- will leave the nest, and that nest will remain there. एक साधारण जड़ जगत की प्रेम कितना घनिष्ठ है In the material realm, there's एक such दूसरे के कैसे खिला रही है आप देखो मैं देखता रहा love. और शास्त्र के साथ मिलाता रहता हूँ And then I और think जीव जगत of में इस the प्रेम का scriptures वर्णन and how to ये जड़ जगत के describe जो मैं उदाहरण दे रहा the हूँ, जो love मैं of the आंखों से देख रहा हूँ, transcendental world. एक पक्षी और पक्षी I'm seeing फीमेल बर्ड एंड मेल बर्ड these male bird and female bird, कितने प्रेम है and और so much female bird love अपने between बच्चों them को कैसे too, अंडे से लेकर बच्चे and से how the कैसे female वो bird is protecting the egg कहीं उसे चोट ना पहुंच जाए तो उससे so it सैकड़ों does गुना, not प्रेम किसमें है become, राधा जी के हृदय में है। इसलिए राधा जी सोच damaged. कृष्ण तो मेरा भाव को दे And दिया प्रैक्टिस using करने this के लिए चलो महाभारत example to तो उसके सहन think कैसे about करना है? कैसे करना the transcendental realm, इसलिए what राधा जी Srimati ने क्या Radhika की? is thinking स्वयं कृष्ण to के protect अंगों में Krishna. क्या किया? अपना ही मानो She covered herself, ये कृष्ण के किसी प्रकार चोट ना so Krishna does not hurt himself. बोलो वृंदावन Bihari Lal ki बोलो jai. जय जय Shri Radhe गोविंद बोलो Hari Gopal Bolo Govinda Bolo Hari
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, हम जड़ प्रेम के जब समझ पाएंगे ना, अपरहित प्रेम का हम समझ पाएंगे। अभी जड़ प्रेम के हम समझ नहीं पाते। एक माता जी के प्रेम हमारे प्रति जो है उसको हम भी समझ नहीं पाते, तो हम भूल गए। कथा तो मेरा समाप्त हो गया, इसलिए कहते हैं एक माँ अपने बच्चों को कितना स्नेह करती है, उससे कोटि गुण स्नेह किसमें है? गुरु में है। और उससे कोटि गुण भगवान में है। उससे कोटि गुण स्नेह किसमें है? राधा जी में है। आप समझ नहीं पाओगे। चलो आपके पास बालक है, छोटा बच्चा है? राज लक्ष्मी को पूछो, बच्चा है कि नहीं आपके? अच्छा, अभी वर्षा हो तो आप क्या करोगे? मानो आपके पास पैदल में जाना है, आप अपने बच्चे को, आप भीग जाओगे, किंतु बच्चे को क्या करोगे? If you have a child, कहीं बच्चा में थोड़ा सा चोट, then you will protect him so he will not hurt. ये जरूरत है। माँ उसी प्रकार बालक संतान से ये पक्षी को उदाहरण देता है। That's the mother love. हम तो भूल गए, देखा ही नहीं, किंतु देखो वो नेस्ट में, देखो घोंसले में, देखो एक पक्षी किस प्रकार वो अंडे के कैसे पकड़ रहा है, बता भी हो। A bird is protecting her nest. I see when I am in Maya's house, I see how the bird's protecting her eggs. जो है आपको दिखाऊंगा, 20 मीटर्स नॉट है, वो भी ये होता है, क्या पड़ता है? स्नो पड़ता है, वो जाता ही नहीं है। The female bird is not going from her nest. वो जाता ही नहीं। दूसरे पक्षी तो उड़ करके चलो जहाँ पर ये है, The other bird is going away छाया है, where there is shadow, वहाँ पर जाकर and she will rest there when there is rain. दूसरी जगह में जाकर आश्रय ले ले। किंतु वो पक्षी अंडा लेकर जा नहीं पाई। But the female bird, mother bird, is not going away. She can't go away. वो क्या करती है? वही अंडे के ऊपर बैठा, She is protecting her eggs. That's why she can't go away. वही अंडा के ऊपर बैठा रहेगा और पंखों को ऐसे फैला देगा। She's protecting her eggs with her wings, थोड़ा सा खरोच ना आ जाए, थोड़ा समझो, कोई चोट ना आ जाए। देखो, so that no one will hurt the अपने eggs. मृत्यु वरण करने के तैयार है, किंतु अपने बच्चे की कहीं तनिक भी कष्ट का खरोच ना पूछे। She can take some hurts, but not her eggs. पिता में इतना नहीं होता, पिता हो सकता भाग जाएगा, The father will not protect. He will go away. पिता तो भाग जाएगा, A father will just go away. पक्षी तो भाग उड़ कर चले। हाँ, मैं देखा उड़ कर। I saw it. He will go away. मैं उसमें देखता रहता हूँ, ये जगत की प्रेम प्यार है। I'm just thinking and see what kind of frame is here in this आपने world. देखा, मैं देखा आंखों से, Did you see? I saw it. कैसे कुदरती है। करिश्मा और कुदरती, भगवान की तो यही दो चीज वस्तु है, याद रखना। एक होता है करिश्मा और एक कुदरती। हाँ, कैसे देखो प्रेम कैसे देखो, करिश्मा कहते हैं क्या? भगवान ऐसी विचित्र रूप में कैसे सृजन किया है, वंडरफुल थिंग। Bhagwan has made. कुदरती आश्चर्य की बात है कैसे? It's wonderful how Bhagwan made this world. यही है भगवान की कुदरती। कैसे कैसे बना है? This is Bhagwan's Mahima. देखो, हमारे आँख यहीं पर होना चाहिए, कान यहीं पर होना चाहिए, आँख यहीं पर होना चाहिए, जैसे जैसे होना चाहिए भगवान उसी प्रकार ही बनाए। Bhagwan made everything just as it's like supposed to be. यह तक भी हम पढ़ते हैं विज्ञान में, देखो The eyes are a perfect vase. The ears are perfect. देखो पानी अलग जगह में चले जाते हैं, देता है एक मुंह में, पानी चला जाता है दूसरे स्थान पर। The water is going in the mouth. बायोसाइंस पढ़े होंगे,
But the water is If you read, if you study the bioscience, if you drink the water, water is going another way. And if you eat the chawal dal, going another way. है? और दोनों फंस जाके जितना पानी तो आपने पी लिया, जितने पानी जरूरत होता है और वो उतनी पानी को वहीं पर भेजता है you have और फिर जो drink चावल है enough. उसके पेस्ट बनाता है जिसके पाचन क्रिया कहा जाता है और जितना जरूरत नहीं है जो जल जरूरत नहीं है जो पानी जो पी लिया उसको क्या करता है कि बाहर निकाल देता है किसी भी प्रकार से You drink water, and your body is taking the water, just enough water, and the water that's too much, the water will take the water, the water that's not needed is going away. और उसको बाहर क्या होता है मल मूत्र के भांति स्टूल के भांति निकाल देते हैं Through the stool. कितने करिश्मा यही तो भगवान की कुदरती कहा जाता है बना नहीं पड़ते सहज में कैसे भगवान बना God is so great. समझने के प्रयास करो Try to understand how He made His body. ऊपर जो है प्रेम की कथा क्या सुनेंगे हम शरीर की समझ नहीं पाते How can we then? We can't even understand the Atma and the body. How can we then understand the Prem? देखो हाथों के जो है बना दिया उंगली एक नहीं है सब एक नहीं है He made our hands, but the fingers are not the same. यही तो कुदरती है This is also great. His greatness. यदि सब उंगली सब एक होते हम लिख नहीं पाते ऐसे पकड़ नहीं If पाते the fingers were the same, we couldn't write. भगवान कैसे बना This is how great Bhagwan made this. इसी कहते उसी प्रभु के बारंबार हम प्रणाम करते हैं We do. इस संसार में हम कैसे के जोड़ करके रखे हैं एक दूसरे के प्रेम के द्वारा एक दूसरे ममता के साथ हमें कैसे जोड़ करके रखा है ये तो हम कभी कभी क्या होते छोड़ करके चले जाते हैं उसके समझ नहीं पाते अपने स्वार्थ के लिए हम क्या क्या कर डालते हैं We can't understand Bhagwan. अपने स्वार्थ के लिए हम क्या क्या करते हैं इसलिए तुलसीदास रामचरितमानस में लिख रहे हैं पढ़ो उसको ज्ञान तो बहुत दे देते हैं Read the Tulsidas Ramayana. और गाय को ब्राह्मण क्या बोलते हैं इसमें क्या लिखा He wrote in this. उसमें रामचरितमानस में लिख रहे हैं तो यही संसार क्योंकि ना मनुष्य जब स्वार्थ में चले जाते हैं सेल्फिशनेस हो जाता है तो भगवान की ये कृपा भगवान की करिश्मा भगवान की कुदरती वो समझ नहीं पाते When people are selfish, then they can't understand Bhagwan's greatness. हाँ माता पिता से बिछोड़ जाते हैं We are leaving our parents. हाँ माता पिता के प्रेम की समझ नहीं We can't understand their love. जिसने हमें पाला पोषा They raised us. प्रेम दिया They gave us so much love. उसको हम भूल जाते But we forget that. हैं भूल ही जाते हैं We forget that. और ना जाने कैसे कैसे कुकर्म करके बैठते हैं And थोड़ी के लिए माँ के भी हम क्या करते हैं मार देते हैं we do bad karma. आज इस पेपर में देखते हैं क्या क्या For example, people are killing their mothers. लिप्त हो जाता है They're doing so much sin. किंतु प्रेम इसी के प्रेम की समझो But understand, try to understand this Prem. तो आगे हम आगे थोड़ा चलेंगे व्यापार जगत में प्रेम क्या वस्तु है Try to understand the Prem in the spiritual world. What kind of Prem Mahaprabhu gave here in this world? ये जो प्रेम बताइए ये जड़ प्रेम है The Prem here in this, समझो से ये क्या है जड़ प्रेम है और क्षणस्थायी the Prem here is temporary and this material in this world. बदल जाए माँ बदल जाएगी आपका जाएगी नहीं हमारे शरीर बदल जाए माने हम जब मर जाएंगे When we die, के घर में जन्म लेंगे तो फिर दूसरी क्या माँ कहेंगे then we get another body, and we get another mother. So we are changing our mother. असली माँ जो है जगत पिता The real mother माता गोविंद इसलिए कहते हैं and the real father is Govinda. उसी के साथ तो जोड़ लो एक बार ठीक है We must connect to him. हम इसी माता पिता के कई असम्मान न करें
है इसी माता पिता की सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। जगत पिता, जगत माता, जगत धात्री वही गोविंद के साथ Must take shelter of Govinda. यही माता पिता हमारे पास जो माता पिता है And we have to pray to him. He's our real mother and real father. क्योंकि जिसके स्नेह के द्वारा, जिसकी ममता के द्वारा, जिसके अंचल के द्वारा, अंचल समझते हो, जिन्होंने मुझे स्नेह रूपी अंचल के द्वारा मुझे रक्षा की है, कहीं हमारी तनिक भी He is protecting us. खरोच ना आ जाए, जैसे पक्षी को दाना, And he is giving us love. पंखा फैला करके बैठा, बरसात के समय देखना है, जिस घोषणा में होता है, मैं आपको दिखाऊंगा, है बारिश भी हो, पंक्षी उड़ करके नहीं जाएगा, है भले ही वो मर जाएगी, किंतु अपने अंडे के ऊपर, बच्चे के ऊपर ऐसे करेगी। Just for example, the mother who is protecting her eggs. Even when it's raining, she will protect it. Hari Hari Go Premanande Hari Hari